अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पुरुषोत्तम योग। पुरुष is पुरुषार्थ। Purush is consciousness. And when consciousness weds Prakriti, world begins. This entire world is just a dancing madness. But so are we caught in the mire of this world. That we do not see the cosmic dance behind it. And hence we are caught. At the moment we are caught, we are deeply attached to body, mind and intellect. And hence invite sorrows infinite. A very logical sequence, friends. 1 घंटे के हमारे संवाद के बाद आदमी फिर से मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा प्रेमी, मेरा भाई, मेरा शत्रु इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अब कितने लोगों को आप हटाओगे? जब मैं को हटा दिया तो सब अपने आप हट गए। The world remaining the same, it can bring joy to somebody and it can simultaneously bring sorrow. The world remaining the same. Why this paradox? Purushottam. And hence, friends, when Bhagavan says, I told you, knowledge of knowledges, Brahma Vidya, Vedant, Bhagvadgita, Purushottam Yoga, and the stanza where Bhagavan declares that I am the author of Vedanta. Vedanta itself is the summary of Vedas. दोस्तों, वर्ण संकर हुआ है। ब्राह्मणों का काम शूद्र कर रहे हैं, शूद्रों का काम वैश्य कर रहे हैं, वैश्यों का काम क्षत्रिय कर रहे हैं। वर्ण संकर है। इस संसार में जात नहीं है, लेकिन वर्ण जरूर है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं सवर्ण। पुरुष समझना चाहिए वेदों का इससे क्या मतलब है? आज सारे ब्राह्मण वैश्य हो गए, सिर्फ बिजनेस का सोच रहे हैं। भिक्षा और दीक्षा ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। किसी ब्राह्मण की हिम्मत कि वो गुरु दक्षिणा पे काम चलाए, मरने की नौबत आती है। तो वो मांगने लगा तो वैश्य हो गए। और पूजा करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी। भूल गए लोग
और ये वर्ण संकर हमें पुरुषार्थ से दूर करता है। ये वर्ण संकर हमें पुरुषार्थ से दूर करता है, क्योंकि हम उलझ गए हैं दूसरों के धर्मों। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा लगे, वो भयावह होता है। इसमें बहुत बहस हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण मरने को तैयार नहीं है। वेद वर्ण संकर के कारण लगभग लुप्त हो गए। नष्ट नहीं बोलना है, वेद कभी नष्ट नहीं होते, वो अपौरुषेय है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृद्वेद विदेव च। आई एम द ऑथर ऑफ वेदांत। वाह, वेदांत यही सबका अंत है, तात्पर्य है, सारांश है, और उसका ऑथर भगवान है। इसलिए भगवान ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज की है एक अलग माध्यम से, ज्ञान की दिशा से। हम आपको बताया था 13वां 14 15वां 16 17 18 ये है ज्ञान योग। एंड व्हेन ही सेज आई एम सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, मैं आध्यात्मिक हृदय में बसा हुआ। अभी आध्यात्मिक हृदय क्या है? जो मन विकारों से ग्रस्त नहीं है, जो मन बुद्धि से भ्रष्ट नहीं है, जो मन शरीर के आदि व्याधि से ग्रस्त नहीं है, जो अविकारी है, ऐसे शुद्ध मन में या शुद्ध मन से जो प्रस्फुटित होता है, वह ईश्वर किसी का एक और किसी दूसरे का और रह सकता है क्या? कभी कभी नहीं रह सकता। आप बताओ मुझे, मुसलमान अलग हंसता है, हिंदू अलग हंसता है, अगर दोनों सही हंसते हैं तो उनकी हंसी है सिर्फ, बस वो हंसी मुसलमान की नहीं हो सकती, वो हिंदू की नहीं हो सकती। न हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में इंसान चला गया। बाकी बकवास है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। So I am sitting in the spiritual hearts of all. And from me comes memory, from me comes knowledge, from me it is the absence of knowledge also. Now what do you mean by absence of knowledge? See friends, there are two things in life. One is acquisition, another is retention. Acquisition is constantly acquiring something. Acquisition is something new which is happening, and retention is, और गोंदलकर महाराज ने कहा है, in spirituality retention is more important than acquisition. Retention is more important than acquisition, because even if you retain 2 gems of yours which you have earned either through his grace or through your purushartha, they're far more important. सारणीतून सगळं गळून पडलं तर काहीच अर्थ नाही. आणि बरेचदा बरेच मित्र माझे बोलता बोलता म्हणतात, एक आयुष्यात वेळ होती, बरंच काहीतरी चांगले दिवस होते, चांगलं काहीतरी मिळालं होतं, ते हरवून गेलं कुठेतरी. का हरवलं? सारणी. Retention is more important than acquisition. You may get fabulous lectures here and there. You may get fancy terms and terminologies. You may get Sadgurus, Mahagurus, Jagat Gurus in your life.
But if you are not able to realize and retain what you had acquired earlier, it is more than simply a kind of tickling or a sensual joy, nothing else. Trust. Because we do not react properly. We have to react properly to the set of stimuli which you receive. And our vasanas direct the course of our action. जो निर्वासना है वही निष्पाप है. आदमी वासना से पूरी तरह से भरा हुआ है. न जन्म घेणे लागणे वासने संगे. He lives, yet he does not live. I can leave diamond, but if diamond has not left me, the thought of diamond will constantly trouble me, because I have left diamond physically, but the diamond is not dying. It is not dying. It is still live in my mind, and therefore our Bhagavan always used to say, "Die mind is a real diamond." How true it is! Unless we roast our mind, unless we roast the seeds of vasanas, the vasanas would sprout. It doesn't require any age, color, creed, climb, religion, the place, nothing. Because the diamond is not dead in our mind. Diamond has left us, but we have not left diamond. Anger has not left us. We left anger. N number of times we have discussed this, and Bhagavan is again reminding us the same thing. And therefore, friends, don't bother about what we have earned over here. If at all you have to bother about what has been retained or what has not been retained. आपण लहानपणापासून एवढे वेगवेगळे संस्कार मिळाले आपल्याला. लक्षात काय राहतं माहिती? ज्याची उजळणी झाली तेच लक्षात राहतं. आणि लक्षात तेच राहतं ज्याची उजळणी होते, आणि उजळणी त्याचीच होते ज्या प्रकारची वासना आपल्याकडे. का एवढे टीचर्स काही चांगलं सांगतात लहानपणापासून फार कमी लक्षात रहता, बहुत कम याद रहता है अपने को. कई लोगों ने कई बार कई जगह प्रवचन दिए होंगे, हमारे शिक्षकों ने भी बचपन में, लेकिन रहता क्या याद आता है? उस लड़के ने या उस लड़की ने वो मस्ती की थी, वो याद रहता है, क्योंकि उसकी काफी बार रिवीजन हो गई. और रिवीजन हमारी वासना के हिसाब से ही होती है. जीवन भर सुधियों की भीनी भीनी वास नहीं मिटती, मैं और मेरे परिवार की आस नहीं मिटती. जीवन भर सुधियों की भीनी भीनी वास नहीं मिटती, मैं और मेरे परिवार की कभी आस नहीं मिटती. और ये प्यास जो है, ये प्यास वासना है. मैंने एक बार कहा था, अगर प्यास लगी है और पानी का मोल कर रहे हो, तो आपको प्यास लगी नहीं है. आपको प्यास लगी नहीं है. लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग 400-300 रुपए के केक खाते हैं. मैंने देखे हैं लोगों को ऐसे. 500 रुपए की पेस्ट्री खाते. वासना घूम रही है, वासना प्रोलिफरेट हो रही है, वासना बढ़ रही है. और ऐसे इस प्रोजेक्टेड दुनिया में भगवान वास नहीं करते. भगवान सर्वत्र है का मतलब क्लियर भगवान ने यह बताया है, ओनली विथ प्योर माइंड्स. एंड प्योर माइंड का मतलब होता है जो निर्वासना है. निर्वासना का मतलब होता है जो मिला वो सही, नहीं मिला वो भी सही. ही सिद्धांत आहे का? तुम्ही म्हणाल खूप कठीण आहे हो. अहो काही कठीण, एक क्षणात होऊ शकतो. निमिष मात्र बोलाय श्रीमद भागवतम, निमिष मात्र बोलाय, एक क्षणात होऊ शकतं. There is no process, there is no theory. All theories are bogus. Krishnamurti. You cannot have structural workshops for happiness.
You cannot have structural workshops for holiness. You cannot have structural workshops for success. Once a saint asked Bhagwan Sri Satya Sai Baba, I don't remember, Ramakrishna Mission or, I mean, in a very private interview. Now I'm saying saint means a proven saint, right? Who had established his Vedanta, who had established his own Lokant, who had established his own standards of people giving certificate of his. I said at times he was also struggling for that eternal happiness or bliss which he spoke about. And since he was convinced about the divinity of Satya Sai Baba, underline this, unless objectively I am speaking, he asked this question. And Bhagavan used to always refer to different for different people. And then he smiled. I really don't recollect his name. Then he smiled. Names are not important, but maybe for the reference I was, so that you could have searched it across. These are all wonderful examples. He patted. There were 4 or 5 people around. And he said, I'll ask one question, you just answer it. वरिष्ठ साधक थे बहुत साधना की दृष्टि से, और ये मैं लोक उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ दृष्टांत के साथ. बोले क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बी हैप्पी? When we speak about happiness, of course this is not sensual, that goes without saying, not borrowed from any objective contact with the world. And Swamiji patted on his shoulders and said, just repeat 3 times with me. You want to know? Then be happy. First 3-4 लोग जो थे समझा नहीं. Second time he said the same. Third time said, and then he laughed. And he came out of the interview room laughing and said, oh, the Maya had caught me up down over there. And before Maya started playing up, Bhagavan, you blessed me around. Yes, he was from Ramakrishna Mission class. Now I recollect. Some Karunanand or something. This is 1950s story. Now the इतिहास का महत्व नहीं है, साल का महत्व नहीं है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि this story. अब इसका मतलब क्या हो बताओ? Workshops होते हैं. How to be successful. You know the answer for this? Be successful. You cannot structure the process of success. Just be successful. That's it. Friends, the question is the Purushottam. And Bhagavan refers to it when I am the author of Vedanta. Is he not showing his presence? What else we want? What else we want? We want Vedanta. Do not want author of Vedanta. Till the time we want Vedanta, we are in a process of structuring something. The moment we have author of Vedanta, all wants finish. This is Purushottam Yoga. Nothing else, no one else, nowhere else. Once me, this embodiment with the attachment of the identification with BMI, and one Dr. Rao from Metallurgy Department, IIT Mumbai, asked Swami Chinmayanand one question 30-40 years back. Because I had, by blessings of Lord, the greatest exposure to Krishnamurti. And there were some anecdotes, some references I mentioned. You know, he laughed in his very special style and said, Are Baba used to say like that, Krishnamurti sits on my head. Now see the honesty of Swami Chinmayanand. Krishnamurti sits on my head का मतलब ही हो गया कि I am talking about Vedanta. That doesn't mean he had not established in his Krishna. No. But this humility, the hallmark of a true saint, and respecting the question, because the question was of, especially posed by Dr. Rao. It's like this.
I might quote Vedanta, but probably what you are saying is the author of Vedanta. That's what he mentioned about to do. See friends, पुरुषोत्तम, पुरुष का ही अर्थ कॉन्शियसनेस होता है एक प्रकार से, अलग अलग मतलब है उसके, लेकिन कॉन्शियसनेस, वर्ड्स, प्रकृति वगैरह वगैरह. Don't go into the scholastic aspects of Bhagavad Gita because scholarship can loot us away individually for ourselves. But the realization, साक्षात आकार इस साक्षात्कार. So हमारे अंदर ही अंदर जिसका एक आकार निर्माण हो, आकार का मतलब होता है हमारा एहसास. Yes, friends, when Bhagavan says I'm sitting in the heart of hearts of all, is the spiritual heart. The spiritual heart is pure mind. Pure mind is nirvasana. Nirvasana है वो निष्पाप है. निष्पाप है वो भगवान के नजदीक है. लेकिन निष्पाप का मतलब ये नहीं कि सीड्स है, सोए हुए है, कभी भी वृक्ष बन सकता है. निष्पाप का मतलब रोस्टेड सीड्स. Roasted seeds which will never sprout. The vasanas, the fragrance of vasanas would never trouble us in root. इसीलिए 86% मन के खेल में हम सभी फंस जाते हैं. यद्गत्वा न निवर्तन्ते नहीं होता है, फिर से चले जाते हैं. अनुभव हो गया लेकिन फिर से चले गए वहां, क्योंकि seed of vasana was very much there and it sprouted. The moment it got a fertile land, it sprouted. एक शख्स थे, उन्होंने मुझे पूछा वासना में रहना क्या खराब है. देखो सब पंचदशी लेना चाहिए, हम कभी आगे जरूर सोचेंगे ईश्वर की इच्छा हो. उसमें एक जगह बोला है कि इतना भोग करो, लेकिन उसका अगर व्यवहारिक कर देखे तो फंस जाएंगे. मेरे मित्र का यही प्रश्न था कि हर वासना पूर्ति में एक आनंद है, और ऐसे छोटे छोटे मैथमेटिक्स उसको अच्छा तरह से जानता था. तो बोले समेशन ऑफ ऑल वासना पूर्ति इज इक्वल टू ब्लिस. लेकिन वासना proliferates. That is a catch. If I am repeating, friends, if vasana is getting exhausted, you are allowing a fertile field to exhaust your existing stock of vasanas. You are moving towards nirvasana state. It's perfectly all right. Apparently somebody might take, अरे यार ये प्रवचन देता है गीता का और 6:30 बजे शराब की बोतल लेके बैठा है. आज भेजता हूं ये फोटो भगवदगीता के ग्रुप में. क्या रिएक्शन होगी? इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ, द अदर सेल्फ, essential self will be talking to non-essential. अतुल बड़ी बातें हो गई, 6:30 बजे गिलास लेके बैठ गए. दोस्तों, that is apparent. If I am providing, I'm just giving a very haphazard example, if I am providing the field to exhaust the stock of my existing vasanas, I am moving towards the stage of nirvasana. How? Where is the question of? There is no otherness. There is no otherness. Matter ends. And that is how we see contrasting and contradictory situations in our life. In God's world, there is nothing contradictory. In God's world, there is nothing contradictory. There is no redundancy. If we really know this, we are true friends. Somebody asked me the question 7 days back. I just forgot to deal with that last time. The question was very poignant question. That are the situations in life contradictory? No. They are in line. They are in alignment with our vasanas. There we call it as fate. They are never contradictory, because in contradiction, the real life exists. So if we have real life, that contradiction is natural. What we feel, that contradiction is unnatural. Because we do not have ही सिद्धांत, we do not accept. I told you last time, अगर गलत चीज होता, जिस किसी को कोरोना हो गया तो वो बोलेगा क्या भगवान की ग्रेस है मुझे कोरोना हो गया करके? क्यों बाबा? अभी तक तू कल तक प्रवचन दे रहा था कि पत्ती जो हिलती है वो भगवान के आशीर्वाद से हिलती है, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और आपको कोरोना हो गया.
मित्रों, कोई भी अल्फाज अगर उसका इजहार हम करते हैं तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर पत्ती उसके कारण उसके सिवा नहीं हिलती है, ये तो बोलो मत, और बोला तो जो हो रहा है वही सिद्धांत के हिसाब से उसको स्वीकार करना पड़ता है। और ये स्वीकृति अपने आप के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए का है, बाकी कुछ नहीं। देयर इज नो अदरनेस, एंड दैट इज व्हाई वी शुड बी waiting for that inner Atul, that inner Ushaji, that inner Trivendiji, that inner Premaji to get the sanction that yes, whatever is happening, then we are qualified to say पत्ता पत्ते उसके मर्जी के सिवा नहीं हिलती है, नहीं तो वो कहने की चीज होगी और नहीं होगी। और इसीलिए बहुत कम हम इसकी स्वीकृति कर पाते हैं। And that is why it is said that we require the grace of the Lord to realize that we have the grace of the Lord. Other meaning of this is, we might be established in consciousness, but we should be conscious enough to have this realization constantly that we have been established in our consciousness. Krishnamurti used to say, awareness of your awareness is God. Awareness of your awareness is God. Awareness is God is a statement, but awareness of your awareness is God principle for you. And hence, when Bhagavan declares, and now you see, in the light of this, we saw Aham Vaishvanaro Bhutva. तिथे आपल्याला आपल्या जीवनाची पोकळता कळून गेली की अरे साधं मी अन्न पचवू शकत नाही. तिथे ते जे ज्याला कळलं तो थोडस तरी म्हणू शकतो की पान या सृष्टीत परमेश्वराच्या मर्जीशिवाय पान हलत नाही. कबूल आहे. पण खाताना तो विचित्र खातो, त्याला लक्षात येत नाही. तेव्हा त्याला वाटतं मी पचवतो, मी खातो, आय एट. वहां से भगवान ने बैकग्राउंड बनाना चालू किया. मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्ञानों का ज्ञान, मटेरियल ज्ञान, मटेरियल ज्ञानों का सारे मटेरियल शुद्ध ज्ञान का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञानों का ज्ञान, वेदांत, वेदों का वेद, वेदांत, वेदांतों का वेदांत, भगवदगीता, भगवदगीता का वेदांत, 15वां अध्याय का वेदांत, 15वां स्टैंजा. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, Vedanta Kudveda Videva Chaham. And with this background, friends, I know I want to be with my author. Till that duet ends, I want to be just with the author of Vedanta. The Vedanta is scholarship. To be with author of Vedanta is bhakti. And when me and my author of Vedanta merge, we will just be silent, joyfully silent. Awareness of the awareness. And with this, he says, Dvavimau Purushau Loke Ksharascha eva cha Ksharas Sarvani Bhutani Kutasto Kshara Uchyate. Dvavimau Purushau Loke Ksharascha eva cha Ksharas Sarvani Bhutani Kutasto Kshara Uchyate. Two Purushas are there in this world, the perishable and the imperishable. All beings are perishable. Beautiful, beautiful. See the sequence. I am excited. Bhagavan, please forgive me. And the Kutastha is imperishable. Without Kutastha, all perishable things are on the basis of imperishable. All movies are on the basis of an unmovable screen. That unmovable screen is awareness. But I am still aware of that. And hence, you should be constantly aware of this awareness, and that is God. Because I forget when the movie is being played on the screen, I forget the screen, but I remember dancing dog on the screen. I'm caught in the mire of the Maya.
Please take the halt, a very sensible, joyful halt, and ponder. Before you plunder, as Swamiji used to say always lovingly, ponder before you plunder. Just don't, because we are not conscious of our plundering. And hence we do not ponder only. Ponder before you plunder. तुम्ही पाहिलं का, क्रोध येऊन गेल्यानंतर कळतो, कामाचा वेग येऊन गेल्यानंतर कळतो. हे सगळे वेग जे आहेत ते येऊन गेल्यानंतर कळतात. पुढच्या वेळेस सिनेमा पाहायला जाल तेव्हा सांगू नका कोणाला मी सिनेमा नाही पाहत आहे, त्याच्या मागचा स्क्रीनला फक्त आठवण ठेवता. लेट अस एन्जॉय द मूवी ऑल्सो, बट let us be aware of that awareness which is showing this dancing drama of this otherwise non-existent world. Our mind lays importance to the existence of an object, animate or inanimate. We lay support. बरेचसे संत बाह्य दृष्टीने कोणी तपकीर ओढतं, कोणी तंबाखू खातं, आणि आपल्याला फक्त चान्सच हवा असतो. ते पण परीक्षा आहे आपली. बाहेरचं वस्त्र पाहूच नका, आणि आतलं वस्त्र फक्त आपल्याला आतलंच माहिती आहे काय ते. कशाला बाहेरचं वस्त्र पाहायचंय? कोणी तंबाखू ओढतोय का, कोणी चिलीम ओढतोय का, काय करतोय, मग त्याला खरंही म्हणू नका आणि खोटंही म्हणू नका. मी हे नाही म्हणताय की खरं म्हणा, पण खोटंही म्हणू नका, कारण त्याचा काही संबंधच नाही. This infinite consciousness becomes the light. So the play of kshara on akshara is the whole dancing drama of this world. Now where is the play? All qualifications end, all positions perish. But be aware and beware. The world can still loot you. The non-existent world can still mar you up. The non-existent world can still loot us away. फसवू नका आणि फसवले जाऊ नका. Now here we require purushartha, that we are not cheating others, at the same time we are not getting cheated. Friends, the experience of this embodiment and कि yes, फर्स्ट चीज तो नहीं हुई, किसी को चीट नहीं किया, लेकिन कई बार at the material front I got cheated, and I got cheated in the relative reference sense, just to quote the example, and therefore this is a process. ये वेदांत है. This is the process. You have to experience, and then you say, yes, be smart to the extent that you are not getting hoodwinked by the vagaries of this world. Cheating is not that somebody looted me away from my money. Somebody has cheated me on my score. Somebody has cheated me on my academics. Somebody has, no. It's my own Shadripus cheating me time and again and showing their overpowering influence on that. It's a sabotage, inner sabotage. Many of us get looted by the inner sabotage. And this is where Bhagavan says, you've forgotten Akshara. And laying importance to Kshara, the perishable, the declining, the depleting, the deteriorating. We forget, and we get caught in the cobwebs of this. ऐसा नहीं होता दोस्तों. हजारों उदाहरण है. महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. महानता देखो, he knew for sure that there is a truth which exists, either in the relative sense with his book, or we might take some other meaning also out of it. And he was sure that he was playing with the truth. He was aware of the same. So friends, in the relative field of experience, when we talk about or talk with reference to the inert and perishable, the spirit is indicated as conscious principle. देखो, conscious principle जब हम बोलते हैं, it's also again in relation with the perishable. How can something be? See, it's a very simple thing. Obverse and reverse exist together.
हा मी बालपणी प्रश्न विचारला होता. राम राम सगळं आपण करतो, रावणाला नमस्कार केला पाहिजे. रावण नाही तर राम नाही. संपला हिशोब. कठीण जातं, पचवायला कठीण जातं. म्हणून कृष्णमूर्ती कठीण गेले पचवायला. किंबहुना आताच नाही गेले, नंतर पुढची डायजेशनची गोष्ट आहे. कारण अहो सर, कशाला मारलं त्या रावणाला, पुन्हा दसऱ्यालाही मारतो आम्ही, नका काढू. आमचा राम भला. बोलायचं असेल रामाविषयी तर रावण आहे, आणि रामाचा फक्त राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे एवढं असेल तर मग काहीच बोलायची गरज नाही. रामाचा अर्थ आनंद आहे अनेक अर्थांपैकी. कृष्णाचा अर्थ आकर्षण आहे, पण रामाचा अर्थ आनंद आहे. आणि म्हणून मित्रांनो, कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो इन रिलेशन, इन रिलेटिव्ह रेफरन्स विथ द पेरिशेबल. ते स्मृती शॉप मध्ये वर्कशॉप, आम्हाला स्मृती शॉप असायचं, तर त्याच्यात त्या सळ्यांना गरम करून ठोकायचं असतं. ती ठोकण्याची क्रिया जी आहे हे सगळं पेरिशेबल आहे, किंवा ज्याला ठोकलं त्याला. आणि खाली जे कुटस्थ आहे दॅट इज एक्झॅक्टली कुटस्थ, ज्याच्यावर हॅमर होत आहे दॅट इज एक्झॅक्टली स्क्रीन. परंतु तो स्क्रीन पण सळई आहे, मराठी काय चुकलं तर माफ करा, आणि त्याला ते हातोड्याने मारतोय तेवढंच पुरतं ठीक आहे. ते नाही तर नुसतं कुटस्थाला काहीच अर्थ नाही ना. सिनेमाचा डान्स चाललाय म्हणून स्क्रीन आहे, मग आपण म्हणतो त्या स्क्रीनवर सिनेमा होतोय. सो geographical north, if geographical north is defined, then I have east. And hence friends, the imperishable conscious principle is again with reference to the perishable. एक महत्वाचा प्रश्न, आपण का अडकतो असा माझा तो मगाशी सांगितलेला अर्धवट राहिलेला विषय, तो माझा विचारत होता माझा मित्र. सगळं द्वैताच्या संदर्भात बोलतो, आणि तो म्हणतो मला छान वाटतं, जे जे डू नॉट करायला सांगितलंय ते सगळं मी करतो. राग आला तर रागवतो, गुदगुल्या झाला तर गुदगुल्या करतो, स्वतःला दुसऱ्यांना. टिकलिंग्स ऑफ वासनास. काय वाईट आहे? म्हटलं काहीच वाईट नाहीये. मग कसं काय? म्हणजे सगळे शास्त्र फेल होतात. म्हटलं बरोबर आहे, सगळी शास्त्र फेल होतात. मला त्याला वेगळ्याच ठिकाणी देवाला मी पहिले प्रार्थना करतो अशा वेळेस, काही शब्द उच्चारले तर त्याचं समाधान हो एवढंच. मी उत्तर खराब दिलं तरी चालेल, काय बदवायचं असेल बदवून घे, पण त्याचं समाधान निश्चित झालं पाहिजे. म्हणजे मी सगळं सोडतो. बायको म्हणते हे करा ते करा, मी सगळं म्हटलं सोडा, फर्स्ट क्लास, पुढे काय. त्याला मला खाजवून उत्तर हवं होतं, आणि मी ठरवलं होतं की खाजवू देणारच नाही. पुढचा प्रश्न आला, मग हे सगळं कशाला सांगितलंय? म्हटलं नाही सांगितलंय. तो म्हणजे कसं काय? ते दिसतं आहे सगळं शास्त्र, धर्मशास्त्र. म्हटलं कशावरून? तो म्हणजे कसं काय? दीज आर एस्टॅब्लिश सायन्स. म्हटलं कशावरून? आणि त्याला प्रकाश पडला. देवा मित्रांनो, देवाचे आभार मानले. व्हॉट एव्हर इज नॉट एस्टॅब्लिश फॉर अस इज नॉट एन एस्टॅब्लिश सायन्स. It is, these are the words that we know it is established. These are the words I learned from my Nanaji, Dadaji, that Bhagvadgita is an established science. Unless I am an Arjuna, unless I am Saral, unless Gita starts establishing in myself by my own efforts, it can never be an established grantha for me. As simple. And here again I am saying that I am the world and world is me. How true it is, friends. Rest is information gathered from your parents. It is the legacy of information which we borrowed, and borrowed virtues are never sustainable. उधार की जिंदगी उधार की है, चाहे वो भगवत गीता की क्यों ना हो, क्योंकि जब तक वो गीता मेरे लिए, मेरे कृष्ण ने मेरे लिए नहीं गाई है, मतलब I am not established in that, the same meaning, it can never be an. And the friends, he was giggling, he was laughing, he got it so right. He said, I understood. I said, yes, there we are trying to imbibe that.
Whatever you do, reading the Shastras, seeing a movie, doing all those things which have been told by do's and do nots not to do, and this, about the Maya, about the Brahma, about different words and all these aggrandizements of scholarships and Yamimam Pushpitam Vacha. It can still be flowery for you unless we are making conscious efforts to establish the established granthas which we heard or overheard from our Purvas, and then get a testimony again for ourselves, by ourselves, within ourselves, and then we can say, yes, Bhagavad-Gita is a Praman Shastra. Because now it is Praman for me. In my adversity, my Gita did not leave me. In my laughter, I was the friend of my Gita. In my sorrows and sobs, I was more close to my Gita. In my elevations and depressions, in my heightened awareness and the most lowest of the moments of my life, my Gita was of me, and this is your establishment of your Gita for yourself, acting as a Praman, and this is Kutastha. Nothing else. I was not talking about the screen. I was not talking about the Achala. I was not talking about the imperishable, because again that imperishable becomes a vague, abstract concept. Nirakar Nirgun. संपला सगळा खेळ. सगळा सगुणाचा खेळ चाललाय. निराकार निर्गुणाच्या गप्पा चालल्या. मला सारखं ठोकून बघायचं आहे. धनंजय हाटक संपरीक्षा. विपत्ती काले गृहिणी परीक्षा. महाराणे शस्त्रभृतान परीक्षा एंड विद्यावतान भागवते परीक्षा. और ये बाहर नहीं है भागवत, हमारे अंदर का जो भागवत है, जो डुक्रीन करने नहीं रक्षते डुक्रीन करने व्याकरण में फंसा है, जो हमारे स्कॉलरशिप में फंसा है, उसको पूछना है कि क्या ये अल्फाज तेरे अनुभव का हिस्सा है? क्या ये अल्फाज तेरा तजुर्बा बन रहे हैं? This is getting established. I wrote a book along this embodiment. I told you I'll just talk about Dvaita long back, though it is not published because I lost the interest of publishing. And I asked Swami Chinmanan to write a foreword on it, which is handwritten script is with me. The title of the book was Mountain of Love. And the highest is love. ... and the highest is love. And because it was a parallel journey with Swamiji and Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. First of all, he was not keen. He said, normally, and the handwritten signature of Om, he used to write Om Swami Chinmanan. He wrote, get established or getting established, because it was a foreword for the book, getting established in your Sai Ram. Friends, it was such a blessing for this embodiment that I was least interested of publication of the book. What do you mean by publication of the book? What are we trying to show others? उस पर धन्यवाद आया था. उस वक्त तो व्हाट्सएप कुछ नहीं था. घर में आके लोगों ने एक तो बाहर से हाथ मिला रहता और जैसे ही घर से बाहर निकलते बोलते यार कुछ ही सेंस नहीं है, कुछ जो भी बोला रहता. Why do we publish books? Friends, this Kutastha, this imperishable, is my own awareness of the awareness. That's it. And then the entire dance of the perishable. Perishable is different language we can say. My non-essential attachments with BMI, my unhealthy attachments with BMI is the world of is the perishable world. But if that Kutastha, I'm conscious of that Kutastha, the entire dance of the perishable can only be a joy for me. It can be only enlightening play of this Lord. When we ask question in the question in question, like egg and hen,
you will reach a point where you have to finally say, either only God knows. We will in Vedantic language say that it's the cosmic plane. Suppose I am born as a Brahmin. Why I am being punished? It means you are accepting in the heart of hearts that my legacy was also a Brahmin clan. मेरे नाना जी के नाना जी भी ब्राह्मण थे और उन्होंने अगर स्पृश्य किया होगा, उन्होंने अगर छुआछूत किया होगा तो उसका फल मैं भुगत रहा हूं. अगर मैं भुगत रहा हूं तो लॉ ऑफ कर्म, इसका मतलब मैं पहले था. फ्रेंड्स, ऐसे डिबेट होने की जरूरत है. आइदर यू एक्सेप्ट और यू फॉरगेट. आज विचार कर रहा है प्रश्नावर. आणि हे कोण सांगताय तुम्हाला? जे पुनर्जन्म मानत नाहीत ते. मग पुनर्जन्म मानत नाही तर मी 100 वर्षापूर्वी नव्हतोच. आणि स्पृश्य अस्पृश्य हे 100 वर्षापूर्वी संपलेलं आहे किंवा 90 वर्षापूर्वी तर संपलेलंच आहे. मग माझं वय जर 60 असेल तर 60 वर्षापूर्वी स्पृश्य अस्पृश्य संपलं होतं. मी का भोगावं? फ्रेंड्स, you might be wondering where is the question. This is where I was talking about वर्ण संकर. और जहां वर्ण संकर हुआ है वहां सभी पेरिशेबल है. सभी, everything is kaleidoscopic, everything is in the transit. And hence, friends, for us to be a true Brahmin, irrespective of the name which we have borrowed, irrespective of the family we are born in, irrespective of the qualities we have or the qualities we do not have, a true Brahmin is always conscious with his spirit. If I am Vaishya, if I am constantly involved in my trade, don't say that with awareness I am doing trade. Let's not create a camouflage. अगर पेट भरा है तो रिलायंस उछलने की और रिलायंस के भाव कम होने की भाषा बंद कर दो. कोई मतलब नहीं. पेट का आपको खाना दे दिया है भगवान ने. अब खाने को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ट्रेड में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. तो हम वैश्य हो रहे हैं. I need to be conscious. I need to be aware of that awareness, and then only I can understand Purushottam. I'll just introduce in 5 minutes the next and joyfully stop sharp at 6:30. Uttama Purushastvanyah Paramatmetyudarutah Yo Lokatrayamavishya Vibhartavya Ishwarah. But the distinct is the Supreme Purusha. That is what I'm saying. The distinct is the Supreme Purusha. Uttama Purusha, Nanya, called the highest self, the indestructible self, the imperishable self, which only pervades 3 words. What are 3 words? Waking, deep sleep, and dream. And it sustains them. Now, friends, if we understand that he is the conscious principle in waking state, he is the conscious principle in our dream, he is the conscious principle in our deep sleep, even the awareness of his presence in all these states, it leads to Turiya. It leads to, that's why awareness of the awareness, conscious of the conscious, light of the light. I told you once, we are in the light, Dvaita. Light is in me, Vishishta Advaita, and I am the light, Advaita. But this still can be words. यहाँ खत्म नहीं होता है. I am in the light, light is in me, I am the light, and I am the light is only my awareness. Then I am enlightened. Because the moment I say I am the light, I am not the light. And this is where Bhagavan says, but distinct is the Supreme Purusha. है ना? हे म्हणून बरेचदा लोकांनी 15वा चॅप्टर फक्त चॅन्टिंग पुरता सोडून दिलाय. और गजब की चीज है भाई ये. आप बताओ ना, मैं लाइट में हूं, लाइट मुझ में है और मैं लाइट हो गया, बात खत्म हो गई. मी एंड माय गॉड इन हेवन आर वन. बात खत्म हो गई. नहीं, कारण मला सांगावं लागतंय मी एंड माय गॉड. आमचे एक डॉक्टर भागवत होते अकोल्याचे. सुंदर प्रवचन, रामकृष्ण मिशनचे त्यांचं बरंच स्टडी होता. पहिले मोठमोठे मास त्यांना अटेंड करायचे आणि त्यावेळेच्या जमात
त्यांनी मला एक पत्र लिहिलं होतं, अतुल म्हणे तुला काही क्वेरी असेल तर मला फक्त पत्राने पाठव म्हणे, ते 15 पैशाचं पोस्टकार्ड. मला जमलं तर देवाजवळ बसून त्याचं उत्तर देईल, नाही तर काहीच अर्थच नाही रे म्हणे, सगळी लोकेशन आहे. 25 लोक ऐकतील, तुला वाटेल फार चांगले तू सेवा केली म्हणून. एकाने घेतलं का आणि कोणी बदललं का, आणि तो एक कोण आहे माहितीये का, तू स्वतः. आणि ते एकांतात गेले म्हणजे गेले म्हणजे एकांत स्वीकारलं त्यांनी. आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात मित्रांनो ही वेळ येते, आणि ही वेळ याच्यासाठी येते की हे सगळं खटाटोप जो आहे ना फक्त शांत सुख आहे आपल्यासाठी आहे. आणि जर आपण बदलू शकलो तर जीवन इतकं सुलभ होतं ना. खूप दुःख येतात वेगवेगळी, प्रत्येकाला इथे उपस्थित आणि बोलणारा सगळ्यांच्या जीवनात वेगवेगळी दुःख आहे, कधी कोणाला काहीच कारण करणार नाही, पण त्या दुःखाकडे पाहण्याचा त्याचा तो दृष्टिकोन बदलतो. आणि याच्यातही नवीन काय हेही माहिती असतं आपल्याला, पण मग कधीतरी का असं ग्रीफची वेळ येते, कधीतरी वाय देयर इज अ रिमॉर्स, बिकॉज वी आर नॉट अवेअर अवेअरनेस. आणि हा नेमका उत्तम पुरुष हा या लाईट पेक्षाही कुठला वेगळा लाईट आहे हे आपण पुढच्या वेळेस समझने का प्रयत्न करूँ. अगली बार हम उसको भगवान की दृष्टि से, और भगवान की दृष्टि में सृष्टि रखो. भागवत का मैसेज, एक बार एक स्वामी जी ने मुझे कहा था, एक लाइन में भागवत कहना है कि भगवान की दृष्टि में जो सृष्टि है वही सही सृष्टि है, बाकी हमारी सृष्टि है. और पूरे भागवतम का यही सिद्धांत है. अगर उस परिप्रेक्ष्य में हम श्रीमद् भागवतम समझ गए, भगवान की दृष्टि में सृष्टि देखी, हमारे दृष्टि में सृष्टि देखी तो ठीक है. With these friends, the blessings of Lord Krishna as ever, we shall have the synoptic version and the summary report of the entire 15th chapter next time, including the discussion till 20th of this stanza of this particular section, which is named as Purushottam Yoga, and hope that I re-appeal to all of you that बसता उठता जेव्हा जेव्हा पाण्याचा एक थेंब जरी घेतला आणि खडीसाखरेचा एक दाणा जरी घेतला तरी त्यावेळेस कॉन्शियसली लक्षात ठेवा. मी हात जोडून सांगतोय, मला काही मित्र विचारतात की मंत्र कुठले आहेत गीतेतले. तसं सगळीच गीता मंत्र आहे, पण त्याच्यात मंत्रातलं मंत्र जसं म्हणतात मननात त्रायते इति मंत्र, हा तसं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम ध्येयमाश्रिता हा मंत्र आपलं तारण करतो. आणि हा माझा अनुभव आहे म्हणूनच बोलतोय, स्वानुभव आहे. वाईट कधी कधी खाल्लं, उलट पालट खाल्लं, बरेचदा खाल्लं, एकदा काय अनेकदा, पण हा मंत्र जर म्हटला याचा अर्थ मुद्दाम वाईट खाऊ नका की मंत्र काम करेल तुम्ही खात राहा. पण कळलं सगळ्यांना डॉट डॉट कधी अनिच्छेनी, कधी इच्छेनी, कधी वासनेनी आपण खात राहिल्या गोष्टी, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं. मी फिजिकली म्हणतोय, त्याला आता अद्वैत अर्थ देऊ नका की खाणं म्हणजे मग सगळ्या इंद्रियांच्या द्वाराचं खाणं बोलता का, नाही. कधी कधी आपण स्पष्ट तेवढंच बोलावं फक्त. मग ते डोळ्यांचं खाद्य, कानांचं खाद्य वगैरे ते खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी आहेत, त्याचं नाही करायचं. आता मी खाणं म्हणतोय, अगदी पदार्थ सेवन आपण सगळे प्रयत्न करूया. करतच असाल, मी माझ्यासाठी म्हणतोय की प्रत्येक वेळेस खडीसाखरेच्या दाण्यात पाण्याच्या एका थेंब मी स्मरण करेल की मी अन्न पचवण्याची ताकद माझी नाहीये, तो वैश्वानर जो पोटातला आहे तो त्या अन्न पचवतो. आणि म्हणून अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम ध्येयमाश्रितः, प्राण अपान हे दोन प्रकारचे वायू आहेत. प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम. मागच्याच पावलं हे स्मरण करत आणि भगवंताच्या पुरुषोत्तम योगाच्या बरोबर आपलं एक अद्वैत साध्य करण्याचा आपल्यासाठी आनंदाने प्रयत्न करत हनुमानजी आणि नारदजी पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. हरि ओम.